Okay, today we'll be discussing about the intervertebral disc prolapse, or we can also call it herniation. And we will see the different aspects of intervertebral disc prolapse. Like we will start with the clinical scenarios, and then we will also see what are the different management options for that. And I guess we can keep the question for the last, or if you guys have any question, you guys can leave a message or a text over there for the Zoom, and we can answer all those questions at the end. Okay. Sir, before we begin with the presentation, I'd like to just introduce you. So Dr. Farrukh Javeed is a very celebrated neurosurgeon at JPMC, and he has multiple accreditations. So we're very lucky to have him here and talk about the spine, which is something that we haven't really discussed a lot in our Neurosurgery Nova series. So like intervertebral disc prolapse and herniations are something that are very common, especially in old age. And to know the conventional and endoscopic surgical treatment for that is something that every neurosurgery aspirant would be interested in. So let's see what Dr. Farrukh has to tell us about it. So Dr. Farrukh, on to you. Okay, thank you. And I would like to start the presentation. And first of all, I would like to have a few questions. I'm sure that you guys must have these questions in your mind when you're talking about the intervertebral disc prolapse. So starting with obviously, what is the definition, or what is actually the disc prolapse, or why do we call it herniation or prolapse? And then we have in mind what is actually the intervertebral disc. Okay, like anatomically, what is intervertebral disc, and why are these very commonly prolapsed or herniated? And similarly, what is the background? What causes the disc prolapse? And then how do these patients present clinically with the symptoms and then the clinical examinations? And then how do we diagnose actually these very important and very common pathologies? Similarly, we will talk about the management option, like the medical management, like the surgical management, and different surgical options as well. The pros and cons of each treatment option. Why do we opt for medical treatment? Why do we opt for surgical treatment? And what are different benefits? Similarly, we will also talk about the recovery and the outcome of these patients when we treat them. Okay. So as we all know that the prolapse or the herniation is a very common term in the medical field. Herniation is like the prolapse of any, or the shift of any normal content from its own cavity to the other cavity. Okay. Similarly, when we talk about the intervertebral disc prolapse, the disc prolapse is the intervertebral disc is actually confined within the borders of the vertebral bodies. Okay. So if the disc prolapse, the disc is going beyond that boundaries or that margin of the vertebral bodies, it is called the disc prolapse. So there are different stages of that disc prolapse. We will talk further in detail, but the simplest thing is that when the disc is prolapsing or going beyond that vertebral body level, especially into the spinal canal or into the intervertebral foramina, so that is called the disc prolapse or herniation. We use a lot of terms for these prolapses. We simply call them the backache. Patient comes with the complaint that we have that I have a backache for so and so time. Similarly, they come with the very common term, the Farrukh, or we call it sciatica. And then we also call them prolapse, herniation, disc slip. Similarly, some patients describe that हमारे जो है ना वो disc में gap आ गया, this increased gap in the vertebra, because someone has told him or her that कि उसकी जो है ना वो vertebra के अंदर gap आ गया, that is causing the pain in the back and also the leg. So there are so many terms for that. Similarly, nerve compression का भी word आता है इसके अंदर, that we call it nerve compression. So these are so many terms जो कि simply जो है वो mainly disc prolapse के लिए use की जाती है, but for instance we also use these terms for spinal stenosis. और इसी तरीके से और जो lumbar spine की जो problems है, like there are listhesis, there are osteophyte or degenerative changes
So all those terms can be used for them as well, but commonly for the disc prolapse or the herniation. So I'll start with the anatomy. You should also know the anatomy of the vertebral column. As you know, you can see the cervical, thoracic, lumbar, sacral, and then the coccygeal. But you should remember the curvature of the whole spine. Like we have the anterior curvature for the cervical, then we have the posterior curvature for thoracic spine. Similarly, we have anterior curvature, we call it lordosis. That is for the lumbar spine. And then we have a posterior curvature for sacral spine. So this is the normal posture or the normal anatomy or the alignment of the spinal column. When we particularly talk about the lumbar spine, as you can see, we have the anterior curvature. So we call it the lordosis. So there are so many terms. We also use like the muscle spasm or loss of lordosis when the alignment is not there. And generally alignment में क्या problem आता है वही होता है कि the whole spine, especially the lumbar spine, straightens up. ठीक है, that shows that there is a muscle spasm either because of simply a stretching exercise or weightlifting, or because of the underlying pathology like disc prolapse, stenosis, or any other pathology related to the lumbar column. So as you can see, we have the lumbar spine L1, L2, L3, 4, 5, and then we have the sacral spine, especially the S1 vertebra is very important because most of the disc herniation are at the level of L5 and S1. Okay, we will talk further about why it is more common at the L5 and S1 level. So this is the basic anatomy. Similarly, coming to the intervertebral disc, actually, what is intervertebral disc? Simply the cushion or soft jelly-like tissue within the vertebral column that supports the two adjacent vertebra. Okay, so it's not only about the lumbar vertebra. At each level, we have the intervertebral disc, but today we are actually talking about the lumbar intervertebral disc, so we will stick to that. So we have the intervertebral disc, and it has two major components. One is nucleus pulposus, the central one, and then we have the annulus fibrosus, the outer one. Okay, so we need to know the basic structure of this. As you can see, we have a circular one, the outer one, the annulus fibrosus. It is slightly firmer than the nucleus pulposus. Nucleus pulposus is actually a very soft jelly-like structure that is contained within the annulus fibrosus. It's not only about the right or left. It is the annulus fibrosus is covering the nucleus pulposus from all sides, from above and down as well. Okay, so ये basic उसमें structure है जो कि बहुत से लोग miss कर जाते हैं कि शायद ये सिर्फ side से cover करता है. It's not covering the sides. It's covering from all the sides, from above and down as well. Okay, then इसके अंदर फिर इसको further हम इसको discuss करेंगे कि इसकी composition क्या होती है, because that composition is very important to know the pathophysiology of the disc prolapses. Similarly, once this beyond this intervertebral disc, we have the end plates that are covering the vertebral bodies. Okay, and they are directly related with the intervertebral disc actually. जब भी problem आता है intervertebral disc का, the end plates are usually the ones जो कि हमें findings नजर आती हैं scans के ऊपर, and we see के end plates उनकी वो eroded हैं या उसके अंदर osteophytes हैं या they calcified हो गई हैं. So these things are very important because these are actually the nutrition supplying as well for the intervertebral disc, and also उसकी protection में भी help करती हैं. So the rest of the anatomy, as you can see, we have the spinous process over here. I don't know if you guys can see the marker, but we have the in the midline we have the spinous process, and on the lateral sides of that we have the laminas, and then we have the transverse processes, and then we have the central canal containing the nerve fibers and the spinal cord, and at each level we have one nerve root exiting from that level. So now coming to the intervertebral foramen, actually it's very important to know about the intervertebral foramen anatomy, because
every nerve that is exiting the spinal cord is going from this, is using actually this foramina to go outside and then supply the different muscles in the leg. So this is very important. As you can see, we have the upper facet. Then we just let me find the marker, I guess. So we can see your cursor. So if you want to continue with that, you can. Okay. So we have this is the upper facet of this vertebra. Okay, then this is the lower facet of this vertebra. And the intervertebral foramina is formed with the help of these. Here we have the spinous process. These are actually the lamina. Just beneath the lamina and the upper facet, we can see we have the exiting foramina, that is the intervertebral foramina. Okay. So every nerve is going out from this level, but as you can see over here, because of the curvature of the spine, the L5 and S1 level, we have the narrowest intervertebral foramina. That is why the commonest cause of intervertebral disc prolapse at the level of L5, S1. Okay. And the second most common is L4, L5, and then as we go up, the percentages are decreasing, but the most common one still remains the L5, S1. Again, another picture to show the intervertebral foramina. As you can see, the nerve is exiting from this foramina. This is the pure lateral boundaries or the lateral view of the vertebral column. We have the body, we have the transverse process. This is the upper facet, this is the lower facet of this vertebral body. This is the spinous process, this is the lamina. And here just beyond that, just behind this part, we have the pedicle actually, that is joining the laminas and the lateral bodies and the lateral masses to the vertebral body. So formation of lordosis, again, very important to maintain the curvature of the spine. We have a formation of lordosis. Kyun hota ye? As you can see, we have the wedge shape L5 S1 disc. As you can see, the anterior border is larger, anterior length is larger than the posterior one. So this is the wedge shape of L5 S1 intervertebral disc space. Similarly, the L5 is the largest vertebra. It is also of kind of wedge shape where the anterior border is maximized, but the posterior border is slightly smaller. So that is causing or creating the lordosis of the lumbar spine. Similarly, the inclination of vertebra above jo hota hai, wo bhi, that causes the formation of lordosis. Okay. So there are different ranges of okay. Sorry for the interruption because of the internet. So coming back to the pathophysiology, you guys can hear me, huh?
Yes, sir, we can hear you, but the slide is now on the first slide. Oh, actually, I guess I need to share it again. Just give me a minute so I can do it again. No, you guys are not seeing the screen, I guess. Okay. Now Yes, we now are it's back to at this pathophysiology. actual slide. Yeah. Mhm. Okay. So there are different factors. Actually, we cannot call that there is some particular thing or the cause of this intervertebral disc prolapse, but there are so many factors that can cause the disc prolapse or increase the chances of having a disc prolapse. So one of the commonest one are the overweight. Then we have the different kind of occupations, like someone is a laborer or someone has a duty of standing for longer hours, or have a like a gym trainer or heavy exercises or weight loader. So these are the things where the occupation comes in these cases. Similarly, we have the genetic factors as well. Some patients has the genetic factor, and also the overweight comes in families and they have the problem with the intervertebral disc prolapses. Similarly, the smoking is one of the causative factors. Frequent driving or the bike driving actually. Okay, the longer duration of bike driving for so many years also causes these kind of problems. Then we have the different uh, lifestyle, like we have the different sedentary lifestyle, and the loss of uh, exercise in the daily routine. Similarly, there's a traumatic intervertebral disc prolapse as well. Very low chances at the level of lumbar spine, but we more commonly see these traumatic intervertebral disc prolapse in the cervical spine actually. But still, there is a cause because of the trauma in these lumbar spine intervertebral disc prolapses. So coming to So here you can see this is the normal anatomy. This is the spinal process, transverse process. We have the canal where we can see the nerve roots and the spinal cord. And then each nerve is exiting at its own level, right and left. And here we can see there is a disc prolapse. Once the thicker covering is ruptured because of any factor or the chronic uh, uh, because of the chronic irritation or damage. So the nucleus pulposus will come out and cause the compression of the one-sided nerve root, or it can also come at the center. We call it the central disc prolapse or the paracentral disc prolapse. Paracentral is actually causing the nerve root uh, pressure or compression, and the central one causes at the thecal sac. So it can also, when the disc prolapses are large, they can also cause the compression on the both sides at the same time and also the thecal sac. So these are the different types of herniations. Here you can see, so this is the normal disc. Here you can see this is the thecal sac, and this is limited within its confinement. And in the B, you can see there is a central disc herniation. When the rupture is at the center, so disc prolapse will be central and it will cause the thecal sac compression where multiple nerve roots are passing. So patient will have the backache more commonly than any particular nerve root compression. Similarly, when the disc prolapse is on the lateral side, we call it the paracentral or the lateral. So you can see that one-sided nerve root will be compressed and it will present as a unilateral leg pain along with the backache. Similarly, we have
other definitions or other types define like diffuse disc bulge. The disc should have been confined within these dashed borders, but it is coming out beyond that border. So it is a diffuse disc bulge. This is a broad base central kind of disc bulge. Then we have the focal or the lateral one, where the disc prolapse is on the one side. And then if the prolapse is significant and causing compression not only over the nerve root but also the thecal scale, we call it the disc extrusion, where the AP diameter is more than the mediolateral diameter. And you can also see the disc extrusion. So this is the. Then we have the sequestered disc. Then once if the prolapse part of the disc is detached from the normal disc, so it is called the sequestered disc. So there will be no connection between these two. So it can go beyond that margin, and it can actually migrate and cause the compression at a far side. Not too far actually, but still it is actually detached from the disc. So it is called the sequestered disc. So now coming to the presentation, as we taught, the most common presentation is backache. The patient comes for different durations of backache. They also present acutely with the very short duration of back pain that causes sudden severe onset, like after the weightlifting or after having any particular movement or bending movement, the patient feels that back pain. And the patient can also come for a longer duration of backaches, like 6 months, 1 year, and more than even many years. Similarly, patient also present with the unilateral or bilateral leg pain. We call it the radiculopathy. Radiculopathy means one nerve root is involved and the patient is presenting with the feature of nerve root compression actually. Okay, so that is called the radiculopathy. Myelopathy is actually when there is the thecal sac compression or the myelin sheath compression. So the central discs or the stenosis ones usually cause the myelopathies, but the lateral disc prolapses or the foraminal disc prolapses actually cause the radiculopathy. Few patients do present with both when there is large disc compressing over the thecal sac as well as the nerve root. Similarly, we have the numbness of unilateral or bilateral legs, depending on the nerve root, which nerve root is in, whatever the nerve root is involved, the patient will present the numbness and the pain in that particular nerve root. We will talk further. कौन से common nerve roots होते हैं इसके अंदर. Then patient do present with the walking difficulties, like they have the like they cannot walk for longer steps, or they have the difficulty in standing from the sitting position or from the lying position. So patient do present with the difficulty walking and standing upright. Then the patient do present with the urinary incontinence. Not very commonly, but they also have the problem with the urinary control actually. Then we have the leg weakness. Patient can present with the motor deficit of any side of the leg. So there is sensory deficit, so there is a motor deficit as well. So this can be a very bad condition of the patient when the patient present with the weakness. So initially patient have the backache, but if that backache is not treated, so patient can have a urinary incontinence and weakness of the leg. So there is a corda-equina syndrome actually, where we have these features, and these corda-equina syndrome are actually the emergency in related to these lumbar spine surgeries. So patient need to operate within the 6 to 24 hours. So that is the only emergency related to the lumbar spine. So then the clinical examination. So we have to examine these patients properly for their complaints. Like the patient has the backache, so you have to examine the spine first, and you can see if there is any deformity or the change in the curvature. Does patient have the local tenderness at the involved spinal level? Then we have to examine the patient for straight leg raise. Then we also do the femoral test or reverse SLR.
Faber test, tiptoe to see if there is any motor deficit, and there's also a walking on heel test. So these are the different. So first I want to show you this. This is the straight leg raise. In the straight leg, this is actually the passive kind of movement. We ask the patient to not move his leg and leave his leg on us, and we examine the leg with the passive movement of the leg and bending at the hip joint. So patient will feel the pain in the particular nerve root as well as at the back. So generally less than 45 degree, or we can also say the less than 50 degree of straight leg raise causes that patient might have a disc prolapse. Generally, a normal patient can lift it up to the 90 or beyond 90 as well. But when the patient has the disc prolapse and there is a radiculopathy and patient has severe kind of leg pain, the movement is restricted to less than 65 or 50, and in severe cases to the 45 and even 20 degree as well. Then we have the reverse SLR or the femoral stretch test. The patient is kept prone and we do the similar movement, but this time the movement is actually at the knee joint. First, there is flexion of the knee, and then we extend at the hip joint. So patient will have the similar kind of pain with this movement as well. The SLR is kind of sensitive test and not a specific one. We cannot say if there is SLR positive that every patient with SLR positive has a disc prolapse. No, this is not the case. But the sensitivity of the SLR test is very high. So we say there are high chances if the patient has a straight leg raise, so there can be a disc prolapse. Coming back to this picture. So here you can see there are different nerve roots living at each level. Okay. So generally, had the disc prolapse at, for example, here you can see there is a disc prolapse at L3, L4 vertebra. So this will cause the compression of the which nerve root? It is actually the lower nerve root, L4 nerve root, because the L3 nerve root has already exited before this disc. Okay. So the L4 will be the nerve root that is actually compressed at this level. So this is very important. The exiting the nerve root which has already exited before this disc, it is called the exiting nerve root. And then there is a traversing nerve root that is passing and crossing the whole distance of the intervertebral disc. It is called the traversing nerve root. So generally, the normal disc prolapse causes the compression over the traversing nerve root. But when the disc prolapse is more on the lateral side, actually going into the intervertebral foramina, that will cause the compression at the exiting nerve root. Okay, so this is very important कि आपको अंदाजा हो जाए कि exiting का है या traversing nerve root का compression है. Only the far lateral disc prolapses. Far lateral means the disc prolapse that is actually blocking the intervertebral foramina. So those are the ones that causes the compression of the exiting nerve root. So upper nerve root will be involved at that level. Otherwise, we usually call there is a disc prolapse at L3, L4 level. So the nerve root that is commonly involved is L4 nerve root. Similarly, if we are coming to L4, L5 vertebra, the L4 vertebra here, the L4 nerve root here is the exiting nerve root, but the traversing one is L5 nerve root. So generally, disc prolapse at L4, L5 level will cause the compression of the L5 nerve root, and similarly, patient will present with those features. Okay. So coming to the L5 S1, the L5 nerve has already exited. So this is the exiting nerve root. Only a far lateral disc will cause compression at the L5 nerve root. Otherwise, the common one is the S1 nerve root that is involved in cases of L5 S1. So there are different features here. You can see this is the
sensory area for the L4. So you can see that at the lateral side of the hip and thigh, the sensation are from the L4 side, then coming to the anterior part of the knee, and then coming on to the anterior and medial aspect of the shin and foot. For the L5, as you can see, it is at the back of the hip, and then going on the lateral side of the upper leg and the lower leg. So this is the L5 nerve root, and then coming anteriorly over the foot. But when there is S1 nerve root compression, the pain will be all at the back of the leg, from the hip over the upper back. उसके अंदर भी जो है वो बिल्कुल बैक के अंदर होगा अपर लेग में, then on the lower leg again जो है वो बिल्कुल बैक पर होगा, and then on the lateral side of the foot. Here you can see as well the numbness is generally around the knee for L4, on the lateral side of lower leg for L5, and on the back, and also on the lateral side of the foot for S1 nerve root. So these are the important things जो कि हम clinically patient को examine करके we find out which nerve root is involved, and only then we can see or confirm on the investigations. Here again you can see the similar findings. So this is very important. Here you can see for the L4 nerve root compression, there is a weakness of the quadriceps and knee extension. For the L5, generally the dorsiflexion of the great toe is lost or deficient. Okay, so the patient will have a difficulty walking on his heel. Similarly, if the compression is over the S1 from L5 S1 disc prolapse, so plantar flexion of the foot and the great toe will be lost, so there will be difficulty in walking on the toes in cases of S1 nerve root. Okay. Sorry, my screen is. Again, the atrophy, because the quadriceps are involved, atrophy will be for L4, atrophy of the quadricep. In cases of L5, there is no prominent muscle in the foot or leg that is supplied, so कोई खास उसमें prominent नहीं होती. But in the S1, you can see the gastrocnemic and soleus muscle, because that are making the bulk of the lower leg. So वो loss हो जाता है, so you can see the measurements over here. Similarly, different reflexes. L4 का reflex is at the knee. L5 का ऐसा कोई reflex नहीं होता, but then for S1 we have the ankle jerk. So these are the finding on the clinical examination. So we can diagnose on the basis of these clinical findings, and then we can also diagnose on the basis of radiology. Only the findings of the clinical examination will help us investigate further. So we have different kind of investigation like this. We can start with the simple X-rays. If we suspect the patient has a simple backache or the muscle spasm and there is no such finding on the clinical examination, we can go for simple X-rays. If the patient has a particular finding and we suspect there is a disc prolapse, we can go for MRIs. And generally, not for the diagnosis, but when we are managing surgically, we also go for the CT spine to see the alignment of the spine, and in cases where we need to fix the vertebra with the different kind of screws and plates, then we have to measure the lengths of each vertebra, the pedicles and different aspects, so we go for CT scan. Then there is a myelogram as well, which is also helpful when there is a multi-level disc prolapses. So we need to assess which level is the most severe one or which level is causing the most compression. We go with the MR myelogram. We will discuss further. So these are the simple X-rays, as you can see. So this is A is the normal X-ray. As you can see, there's a normal curvature of the lumbar vertebra, and the intervertebral disc spaces are almost equal and almost normal. Here you can see the wedge-shaped intervertebral disc of L5 S1 vertebra. Coming to B, as you can see, there are
different changes. The disc height at this level is very much normal, as you can see at this level. But on this level, this is L4, L5, because this is the L5 vertebra, the largest one. And you can see the disc height, intervertebral disc height is smaller than the normal. So we can suspect there can be a compression at this level. Similarly, these edges, because here you can see this is the normal vertebral body, but here you can see there is a sharp edge of this vertebra. These are called the osteophytes, and these are the degenerative changes. When the spine degenerates, these are actually the finding the osteophytes when we call them, because these are because of the osteoporosis, and we commonly find them beyond 50 patients. Here again, you can see intervertebral disc space is normal. Here it is decreased, but here it is very much decreased and severely narrowed. So we can suspect this patient might have a L5, S1, disc prolapse, or nerve root compression at this level. So we can have these X-rays. Commonly, the lateral views are very important. Similarly, we also go for flexion and extension X-rays to see the alignment of the spine. Coming to the MRI, this is the most or the diagnostic modality for the lumbar disc prolapse. So MRI spine, here you can see this is the sagittal view of the MRI. This is the axial view of the MRI. You should count from the lower lumbar vertebra like the L5. L5, you go in the reverse order, counting L4, 3, 2, 1, and like the upward. So here you can see, so this is the T2 weighted image because the CSF signal is white or hyper intense here. So we have to see these signals. Sorry. So we have to see these signals. This CSF signal should be present at all levels in cases of normal spinal column or without the spinal column without any compression. But when the disc prolapse is there, it actually causes the displacement of this CSF signal, and it will present like a gap in this CSF signal. Okay, and you can see these hyper dense area, the intervertebral disc, is going beyond the limit of the intervertebral, the vertebral body. So there is a compression at this level, L4 and L5 level. Coming to the axial, you always need to see the axial scans to say that this is a central disc prolapse or lateral disc prolapse. So here you can see on the axial, the disc prolapse is actually at the center. I don't know, you guys can appreciate this, but on my laptop, actually, it is, quite visible. So there's a disc prolapse, hyperdense area that is coming from this side and compressing the canal from the posterior. Okay, and the thecal sac is squeezed or sandwiched over here. So this is a central disc prolapse, and these are the nerve roots. This is the right one, and this is the left one. There is slight a problem with the left one because the disc is also compressing the left nerve root over here. But on this side, the compression is very low. But there is a central disc prolapse. Now coming to another MRI, here you can see in a better way that there is another disc prolapse at the L4, L5 level. As you can see, this is the white CSF signal because there is normal CSF in the thecal sac at the lumbar vertebra. So on the T2 images, you can easily see the CSF signal. But when the disc is coming into the canal, it will cause the loss of the signal at this level. And on the axial views, you can see the CSF is actually cornered at the posterior part, but the anterior part is confined by the disc that is coming from this side at the center. Okay, so again, there is a central disc prolapse at this level. And these are actually the nerve roots. Okay, so these are the nerve roots.
Another MRI showing a disc prolapse, but this time it is on the right side. So unilateral radiculopathy will be the presenting feature in this patient. On the left side is normal. The nerve root is completely normal because there's a CSF signal of that nerve, but on the right you can see there is a disc prolapse. Another MRI, as you can see, there is a very large disc. This is T1, this is T2. Okay, so in T1 the CSF is black, on T2 the CSF is white. So you can see there is a compression at the L4, L5 level. Okay, so this is a very large disc prolapse. As you can see, यहाँ पर जो है वो disc इसको, this is the normal disc. On the MRIs, generally there is hyper intensity in the disc spaces that shows that the disc is nutritionally, very well. But here you can see the disc is black. That shows that the disc is dehydrated actually, and that shows that degenerative process उसके अंदर पहले से चला हुआ है, and there is a dehydration because nutrition उसको पहुंच नहीं रही उसके अंदर. Okay, so these are all the findings we see on the MRIs. Luckily or unluckily, सारे के सारे L4, L5 के ही scans इसके अंदर हैं. So another one, as you can see that L4, L5 vertebral disc prolapse, intervertebral disc prolapse, and this is on the left side. It is also coming to the center, but more on the left side. This is the right side. This is the left side actually. Another one showing a very large disc compressing the central and paracentral area more on the left side. Similarly, this is the T1 weighted image. This is T2 weighted image. You can see the CSF signal over here. There is a loss of signal on this side, and there is a disc prolapse at the paracentral area. Okay, so these are the large disc prolapses. Here you can see the disc is so much large that it is completely destroying the CSF signal. The CSF is present beyond this disc level and above this disc level, but there's a almost complete loss of signal at this level because the disc prolapse is so much huge. And also you can see that this is very much darker or black. These discs are normal and well hydrated, but this disc is dehydrated actually. Another one, again, there is a disc prolapse at the L4, L5, but this is the MR myelogram. This one, the C and D, these are actually the MR myelogram. We put a dye in the thecal sac, and then we take the MRIs. So it will show the disruption of the CSF signal. As you can see, there's a complete loss of CSF signal at this level. So the dye will not come over here because of the compression from the disc. So this is the MR myelogram. Generally, इसमें helpful होता है when there is multiple level disc prolapses, like 2 or 3 level disc prolapses, and patient has a severe backache and there is a problem with the walking or the leg pain as well. So we need to decide which level to operate. Either should we go for all these levels, or should we go for the ones who are compressing it more. So we go for MR myelogram to see different levels of compression, and where the compression is the most, we usually go for that, or any other one if there's moderate compression. But for the milder compression, we can wait or we can observe. Similarly, the CT scan can also be helpful in these cases. Here again, you can see we have to find the vertebral bodies and then the intervertebral disc. The spaces are very much normal at all these levels except at this L5 and S1. Here you can see the intervertebral disc is very intervertebral disc space is very narrowed at this level. So if a patient presenting with these features and we have the MRI, we can also see on the CT scan that this space is smaller. So we can appreciate कि क्या पे कभी-कभी होता है problem, like we have different patients जहाँ पर उनके अंदर different metal implants उनके लगे हुए होते हैं, like कोई leg fractures उनको पहले से हुए हैं और उन्होंने कोई implant लगाया हुआ है. So वो फिर MRI उनके possible नहीं होते उनके अंदर. So we go for CT scan
टू सी कि प्रॉब्लम किस लेवल के ऊपर आ रहा है. So those CT scans can be helpful in those cases. So now coming to the management. So management start actually with the non-surgical. मैं अपने पेशेंट को जनरली बहुत कॉमनली बताता हूँ कि हमारे पास लाइक 70% से 80% जो बैक के साथ में पेशेंट आते हैं वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के ऊपर, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के ऊपर ठीक हो सकते हैं. ओके, बिकॉज उनके अंदर कोई मेजर डिस्क प्रोलैप्स नहीं होता, कोई और मेजर अलाइनमेंट के प्रॉब्लम्स नहीं होते उनके अंदर, और जनरली उनको मसल स्पैज्म हो रहे होते हैं उनको, या कोई स्मॉल से डिस्क होती है. सो दे कैन बी ट्रीटेड ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट. देन देर आर 5 to 10% पेशेंट्स जो के आते साथ ही जो उनकी प्रेजेंटेशन होती है दैट शोज कि दिस इज अ सर्जिकल कैंडिडेट, बिकॉज दिस प्रोलैप्स लार्ज होता है, उनकी फाइंडिंग बहुत सिग्निफिकेंट होती है कि गो फॉर द सर्जरी इन दोज केसेस 5 to 10%. रिमेनिंग जो 10 to 15% पेशेंट बच जाते हैं, दोज आर द वन जो एक्चुअली थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं डिसाइड करना, बिकॉज समटाइम्स we go for the medical treatment initially, but patient suddenly present कर जाता है कॉर्डिक वेना के साथ में, या सिवियर उसको पेन होना शुरू हो जाता है, तो we have to opt for surgery. So वो जो बीच के 10-15% patients हैं वो actually are the cases जहाँ पे हमें बहुत प्रॉपर एफर्ट करनी पड़ती है. सॉरी. ओके, सो उनके अंदर जनरली ये होता है कि हम जो पहले नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट का या मेडिकल ट्रीटमेंट का हम ट्रायल दे रहे होते हैं उनके अंदर फॉर लाइक 2 weeks to 6 to 8 weeks तक हम चले जाते हैं. इफ पेशेंट इज इम्प्रूविंग ओवर दैट टाइम विद द नॉन सर्जिकल मेथड्स, सो वी कैन वेट अप टू 6 or 8 weeks, ताकि अगर पेशेंट के सिम्टम्स 80-90% रिजॉल्व हो जाते हैं तो वी कैन कंटिन्यू विद द फिजिकल थेरेपी एंड अदर स्टफ एंड नॉट गोइंग फॉर द सर्जरी. बट अगर ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन पेशेंट के कंप्लेन जो है या फिर जो उसका जो पेन है वो सेटल नहीं होता, तो वी हैव टू ऑप्ट फॉर सर्जिकल मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट डिपेंडिंग ऑन के उसकी सर्जिकल इंडिकेशन क्या बनती है उनके अंदर. ओके, सो नॉन सर्जिकल मेथड्स के अंदर वी एडवाइज देम बेड रेस्ट मे बी फॉर अ वीक, फॉर 2 weeks, डिपेंडिंग ऑन कि उनकी एक्टिविटी कितनी ज्यादा है, ठीक है, और उनको सिम्टम्स कितने सिवियर हैं. Similarly, we go for different type of analgesics. We have simple analgesic, or we can also go for NSAIDs or opioids as well, or we can also advise neuropathic analgesics. Muscle relaxant are again very much common in the prescription of the backache, because patient जब भी present करता है वो muscle spasm के साथ present करता है, बिकॉज उसका अंडरलाइन पैथोलॉजी कोई भी हो, पेशेंट कंपनसेट करने के लिए अपने मसल्स को, अपनी पोजीशन को इस तरह से बनाता है कि द मसल्स आर एक्चुअली स्पैज्म, तो वो फिर हमें मसल रिलैक्सेशन के साथ में देने पड़ते हैं, बिकॉज द मसल स्पैज्म इज एक्चुअली इंक्रीजिंग द बैक पेन. सिमिलरली स्टेरॉइड्स का कभी कभार रोल है, कंट्रोवर्शियल रोल है, बट कुछ लोग यूज करते हैं एक्यूट फेजेस के अंदर, स्पेशली जहां पर हम जो है वो देखते हैं कि कॉर्ड कंप्रेशन सडन हुई है, सॉरी द नर्व रूट कंप्रेशन इज सडन एंड सिवियर, सो एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे हम स्टेरॉइड्स को यूज कर सकते हैं. आई एम नॉट वेरी मच फॉन्ड ऑफ स्टेरॉइड्स, बट लोग करते हैं, सो आई जस्ट नीडेड टू मेंशन इट. देन इसी तरीके से अदर सप्लीमेंट्स डिपेंडिंग के पेशेंट की जो है वो एज क्या है, उसका काम किस किस्म का है. जनरली हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर विटामिन डी लेवल इज लो, बिकॉज जो खवातीन है स्पेशली वो तो बाहर काम नहीं कर रही होती, और आजकल बाकी जो भी ऑफिस वर्कर्स हैं उनका भी कोई सनलाइट से एक्सपोजर नहीं होता, सो वी हैव डेफिशिएंसी, तो उनको भी हम रिप्लेस कर रहे होते हैं साथ में. सिमिलरली मेडिकेशन से आगे, जो ओरल मेडिकेशन से जो आगे का लेवल है वो है इंजेक्शन का लेवल, डिपेंडिंग ऑन के कंप्रेशन किस लेवल के ऊपर है. अगर सिर्फ नर्व रूट का कंप्रेशन है और देयर इज मतलब कोई खास बड़ी डिस्क प्रोलैप्स नहीं है, देन वी कैन गो फॉर रूट ब्लॉक. अगर पेशेंट कंजर्वेटिव पे फेल हो रहा है और कोई डिस्क प्रोलैप्स भी लार्ज नहीं है, वी कैन गो फॉर रूट ब्लॉक्स. सिमिलरली वी कैन गो फॉर एपिड्यूरल ब्लॉक्स, वी कैन गो फॉर फेसिड ब्लॉक, डिपेंडिंग के उसकी लोकेशन, उसकी पेन कहाँ से अराइज हो रहा है. जब डिस्क प्रोलैप्स ज्यादा नहीं है तो वी हैव टू फाइंड कि पेन कहाँ से आ रहा है. लाइक पेन इज बिकॉज ऑफ द मसल स्पैज्म, पेन इज बिकॉज ऑफ द nerve root compression, not because of the disc but other things, like there can be bony areas, or the bone जो है वो thick हो सकती है, and
that can narrow down the foramina and cause root compression. So वो हमें देखना होता है. Similarly, बाजूकात facet आर्थ्रोपैथीज होती हैं कि जहाँ पर फेसेट जो है उनके अंदर चेंजेस आ रही होती है डिजेनरेटिव और पेन एक्चुअली फेसेट से आ रहा होता है. सो वी कैन गो फॉर फेसेट ब्लॉक्स एज वेल. सिमिलरली देयर इज अ sacroiliac joint जहाँ से भी बहुत कॉमन पेन आता है पेशेंट का और वो अक्सर औकात लेग के अंदर भी आ रहा होता है, सिमिलर टू द S1 nerve root. So we go for the SI joint blocks as well in those cases. Then we have in addition to these conservative ones, we also go for very actively for the physiotherapies and we also advise them कि वो अपनी कोई भी ऐसी एक्टिविटी है लाइक कोई वेट लिफ्टिंग की एक्टिविटी है या जो है उनके अंदर जो है कोई लेबरर है. सो वी एडवाइज देम कि वो अपनी एक्टिविटी को भी लिमिट करें फॉर दोज कंजर्वेटिव पीरियड ट्रायल्स. सो उनके अंदर भी हम फिजिकल थेरेपी को भी साथ में बहुत ज्यादा स्कोर करते हैं उसके अंदर. फिर हम उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को भी बताते हैं लाइक एक अपनी प्रोफेशन को भी वो थोड़ा सा लिमिट करें या कोई बाइक राइडर है तो वो उसको लिमिट करें. इसी तरीके से वी आस्क देम टू अवॉइड बेंडिंग मूवमेंट्स लाइक वो जमीन पे ना बैठें. सिमिलरली वी आस्क देम टू यूज डिफरेंट कमोड्स और नमाज वगैरह के लिए चेयर का यूज करना. सो दीज आर द थिंग्स वी आल्सो एडवाइज देम फॉर द lifestyle modification. Coming to the surgical management, we have different surgical management like there are 3 types: open surgery, then we have the microendoscopic surgery, and then we have the pure endoscopic surgeries. In addition to these procedures, we can go for spinal fusion जहाँ पे हमें लगता है कि disc prolapse के साथ-साथ there is problem with the alignment. ठीक है, जहाँ पे हम इसको कहते हैं listhesis, the one vertebra is going anterior or beyond the other vertebra. So उसके अंदर भी alignment के problems आते हैं. We go for the spinal fusions. So वहाँ पे हम उनको transpedicular screws के साथ में fixation करते हैं उनके अंदर. Similarly, there is a very common use of disc replacement. जब young patient हमारे पास present करते हैं जहाँ पे अगर हम disc निकाल देंगे तो over time क्या होगा कि वो जो disc space और further narrow down हो जाएगी and patient might have problems because of the alignment as well. So अगर disc prolapse ज़्यादा है, there is significant amount of disc coming out, and जब हम उसको निकालेंगे तो intervertebral disc space hollow हो जाएगी. So हम और ऊपर से ये कि alignment को improve करने के लिए we go for disc displacement procedures as well कि भी हम वहाँ पर artificial disc लगाते हैं उसके अंदर. So these are different surgical procedures. So one by one थोड़ा सा इनको भी discuss कर लेते हैं. Generally prone position के अंदर किया जाता है. We can also do in the lateral position. जब spine surgeries हैं वो lateral में भी पहले ज़माने के कहने का मतलब है कि I mean जो हमारे जो senior surgeon हैं they used to operate in the lateral position, but nowadays very much common कि हम जो है सारे cases जो है वो prone के अंदर करते हैं उनके अंदर, मतलब पहले lateral करते थे उसके अंदर. Okay. So we mark with the help of fluoroscopy और X-ray. हम उसको मार्क करते हैं कि हमने किस लेवल के ऊपर काम करना है. वी पुट अ मार्क और अ मार्कर. वी कैन डू दिस बिफोर द ऑपरेशन थिएटर लाइक हम पेशेंट को कोई यहाँ पे मार्कर मेटल मार्कर लगा देते हैं एंड वी सेंड देम फॉर द एक्सरेज और वो लगा रहता है. हम फिर ओआर में आके उसको देख लेते हैं कि किस लेवल के ऊपर. अदरवाइज जनरली वी हैव द फ्लोरोस्कोपी और एक्सरेज इन द ओआर नाउअडेज. सो वहीं पे हम उसको मार्क कर लेते हैं. वी पुट डिफरेंट नीडल्स एट डिफरेंट लेवल्स जो कि हमें एक्सरे पे नजर आ रही होती हैं. वी calculate the level and then we start the surgery. Similarly, we go for the midline incision over the spinous process. The skin के बाद subcutaneous tissue, fat, fascia, so हम इनको सारे को cut करते हैं. Then we reach the spinous process actually. ठीक है, यहाँ पे as you can see we reach the spinous process. So depend करता है कि हम कौन सी approach से जा रहे हैं. There are different ways to do this. As you can see here, these are the laminas. So हमें lamina के नीचे होती है intervertebral disc. So either we can go with a small hole in the lamina, making a small hole in the lamina and reaching the disc space, or we can go for hemilaminectomy in जहाँ पे हम half part of the lamina we take, या फिर हम उसको कहते हैं unilateral laminectomy, depending कि उसका अगर एक साइड की उसको पेन आ रहा है तो हम एक साइड का लैमिना को रिमूव करके we can reach the disc space, और we can go for complete laminectomy जहाँ पे हम दोनों साइडों का लैमिना भी ले सकते हैं along with the spinous process to have a better exposure. Okay, so once we reach their head, you can see this is the dura actually. ये फैट है एक्चुअली जो कि ड्यूरा के ऊपर होता है.
ये यहाँ से नजर आ रहा है आपको, and we have removed the spinous process and then the ligamentum flavum. Ligamentum flavum is covering the thecal sac और ड्यूरा। ठीक है, जैसे हम लैमिना को ओपन करते हैं या इसको रिमूव करते हैं तो हमें फिर लिगामेंटम फ्लेवम नजर आता है, एंड देन वी रीच द थीकल सैक और ड्यूरा। दिस इज द ड्यूरा। सो इसी तरीके से फिर हम ड्यूरा को मीडियली रिट्रैक्ट करते हैं। दिस इज द एक्चुअल द रिट्रैक्टर। आपको शायद इतना अच्छा नजर ना आ रहा हूँ, बट दिस इज द रिट्रैक्टर दैट इज retracting the dura on the opposite side while we are working from this side and removing the disc from this side. Okay, so ये हम यहाँ से फिर जो है वो इंटरवर्टिबल डिस्क स्पेस के अंदर जाके जो डिस्क है उसको रिमूव करते हैं और फिर उसके बाद we remove the retractor and the dura वापस अपनी लोकेशन पर आ जाता है। So these are the open surgical methods जहाँ पे हम लोग इस तरीके से करते हैं। You can see in a better way, ये थोड़ा सा anatomical और उसको diagrammatic उसको दिखाया है। So this is the laminectomy bilateral. I mean like we have removed the spinous process over here. ये वाला जो यहाँ पर था हमने remove कर दिया। We have removed the laminas on both sides and then we have reached the ligamentum flavum. This is the ligamentum flavum. ठीक है, and then we remove the ligamentum flavum. उसके नीचे we have the dura. हम dura को जैसे यहाँ पर as you can see we have, this is the dural sac center में, उसके ऊपर this is the nerve root, the smaller one. So depending on the location of the disc, either we can retract both the nerve root and the dural sac on the opposite side and then remove the disc from this small opening. और अगर ये डिस्क यहाँ पर ज्यादा हो and the root is coming like this, so we can retract this root on this side, I mean the right side, and the dura को हम इसको left पे करेंगे and we go यहाँ से इसके बीच में से। So depending on the herniation किस किस्म की है, ठीक है। So these are the common ones. Here you can see we have not removed the spinous process over here. We have only removed a part of the lamina on this side, not on the opposite side, just on this side. So this is the hemilaminectomy. हम एक साइड के ऊपर लैमिना को रिमूव कर रहे हैं and then we are reaching the disc to remove the disc. This is the microendoscopic. Microendoscopic में ये होता है कि there are smaller openings. I mean incision बहुत small सा होता है, बिल्कुल ये छोटा सा आप incision देते हैं। Then we have यहाँ पर पिक्चर होगी as you can see, ये हम डायलेटर्स उसके अंदर डालते हैं। सबसे पहले ये छोटे वाला जो कि सबसे लंबा होता है इसको हम डालते हैं, उसके ऊपर इस तरीके से फर्दर और डायलेटर्स हम यूज करते हैं और उसके बाद फिर हम इसी तरीके का एक ये ट्यूबुलर रिट्रैक्टर इसको हम कहते हैं, तो वो हम ट्यूबुलर रिट्रैक्टर उसको लगाते हैं। फिर उसको देन वी फिक्स इट लाइक दिस। एक हैंडल होता है जो कि ओटी टेबल के ऊपर अटैच होता है, उससे हम इसको फिक्स कर देते हैं एंड विद दिस फ्रॉम दिस ओपनिंग वी यूज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप we remove the disc. Okay, so होता कैसे, हम पहले जब ये dilators डाल रहे होते हैं we see on the x-rays that these dilators or retractors are reaching up to the lamina. It will touch the lamina, तो वहां पे हम रुक जाएंगे। then हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से इस लैमिना को रिमूव करेंगे and then after retracting the dura medially or the opposite side we remove disc from this side. Here you can see इस तरीके से होता है। This is the thecal sac and this is the nerve root. If the disc prolapse is over here, we will easily retract this nerve root and the thecal sac on this side and then work from here. But if the disc is over here, disc prolapse is more at this side, then क्या करेंगे हम, फिर हम इस रूट को इस तरफ रिट्रैक्ट करेंगे laterally and थीका को opposite side के ऊपर and we will go from here. This is called the axilla. ये axilla इसको कहते हैं। Okay, so this is the microendoscopic. हमने एक tubular system लेके उसके ऊपर we with the help of microscope our hands will be free, both of जो हमारे दोनों हाथ थे वो free होंगे and then we can work with that small opening, उसके जरिए हम काम कर लेंगे। This is the pure endoscopic. Pure endoscopic में होता है क्या है कि आपको इस तरीके का बिल्कुल एक स्मॉलर सी ट्यूब इसके अंदर पास करते हैं एंड जो सर्जन है वो सामने स्क्रीन पे देख रहा होता है। इसके सामने हेड यू कैन सी यहाँ पर एंडोस्कोप लगा हुआ होता है
ठीक है, और सारी विजन इसके जरिए आ रही होती है। दिस इज द वर्किंग चैनल, जहाँ से हम अपने इंस्ट्रूमेंट पास करके डिस्क को रिमूव करने के लिए और बाकी चीजों के लिए कर रहे होते हैं। यहाँ पर इरिगेशन वगैरह के लिए, एक साइड पर सक्शन के लिए। सो यहाँ पर लाइट सोर्स भी होता है, और उसके साथ साथ जो है वो क्या कहते हैं, कैमरा भी इसके ऊपर लगा होता है। एंड द सर्जन इज एक्चुअली सीइंग द स्क्रीन, मॉनिटर लगा हुआ होता है, उसके ऊपर देख रहे होते हैं, नॉट एक्चुअली द पेशेंट, और अंदर जो है उसको नहीं देख रहे होते। बट इन द ट्यूबुलर सिस्टम, surgeon is with the help of microscope is directly seeing inside. Okay, और ओपन सर्जरी में तो फिर ऑब्वियसली भी हम डायरेक्टली देख रहे होते हैं इसके अंदर। सो दीज आर द एंडोस्कोपिक। यहाँ पे भी हम इसी तरह का टिबुलर सिस्टम डालते हैं पहले, बट वो स्मॉल होता है, उसके उसका कैलिबर बहुत स्मॉल होता है। एंड एक्चुअली एंडोस्कोप के जरिए ही ऑन द मॉनिटर द सर्जन इज सीन। सो अगेन करते इसके अंदर भी वही है, वी गो विद द, वी यूज द ड्रिल, एज यू कैन सी ये भी ड्रिल है। वी कैन यूज, जब माइक्रोस्कोपिक करते हैं तब भी हम ड्रिल के जरिए बोन को रिमूव करते हैं, और जब हम एंडोस्कोप प्योरली करते हैं तब भी फिर यहाँ पर इसके आगे ड्रिल लगी हुई होती है, और उससे वी रिमूव द लैमिना, and then we take out the ligamentum flavum and then remove the disc. So these are the pure endoscopic procedure. Here you can see this is the monitor actually. The surgeon is seeing the monitor. So monitor बिल्कुल सामने होता है, काम यहाँ पर हो रहा है, but the surgeon is looking at the monitor. Initially we take the x-rays like these. These are the initial retractors. ओके, सो हम प्रोब डालते हैं पहले, वी सी कि हम किस लेवल के ऊपर। एज यू कैन सी दिस इज द L5 एंड S1 वर्टिब्रा। सो हम जो है वो इस लेवल के ऊपर हमने ये प्रोब डाला है, बिकॉज वी नो कि दिस प्रोलैप्स इज एट द L5 S1 वर्टिब्रा। ओके, सो हम इसके जरिए देन वी रिमूव, एंड एज यू कैन सी वेरी स्मॉल इंसिजन, जो कि एज अ डे केयर सर्जरी भी हो सकती है पेशेंट की। इसके अंदर जो है वो पेशेंट बहुत इजीली इसमें कवर कर जाएगा, देयर इज ओनली वन स्टिच। बट अगर ओपन सर्जरी होती है तो फिर हमें मल्टीपल स्टिचेस लगाने पड़ते हैं। दिस इज एक्चुअली द डिस्क, वेरी सॉफ्ट एंड जेंटल, आप उसको आराम से रिमूव कर लेते हैं। अनदर आई मीन पिक्चर, डिफरेंट पिक्चर जो कि आपको शो कर रही है कि वी फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द लेवल, दिस इज L4 L5 ऑन द AP व्यू, देन ऑन द लेटरल व्यू एज यू कैन सी, जहाँ से आप उसको फिर AP और लेटरल डिफरेंट व्यूज हैं। ये L5 S1 है, दिस इज एक्चुअली L4 L5, दिस इज द लेटरल व्यू। उसी का जो है, इसी का लेटरल व्यू ये है, L4 L5 के ऊपर है, दिस इज L4 L5, दिस इज अगेन L4 L5। ये भी इसी की पिक्चर है बट इसकी नहीं है। सो ये इस तरीके से है जो है वो, अगर हम ट्यूबुलर सिस्टम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, सो माइक्रोस्कोप में इस तरीके से दिखता है। बट अगर ये हम एंडोस्कोप से, एक्चुअली दिस इज फ्रॉम द एंडोस्कोप के, ये मॉनिटर के अंदर आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होता है with the help of endoscope. So completely ये नर्व रूट है उसका, ठीक है। सो इस तरीके से भी दिस इज द डिस्क स्पेस जहाँ से डिस्क रिमूव की गई है। ओके, थोड़े से इसके हम और डिस्कस कर लेते हैं। बेनिफिट्स क्या है ओपन सर्जरी के? ओपन सर्जरी में बेनिफिट ये है कि हम प्रॉपर कंप्लीट डिस्क रिमूव कर सकते हैं। इवन अगर डिस्क बायलेटरल हो, दोनों साइड्स के ऊपर हो, वी कैन गो फॉर दैट। इवन डिस्क इज गोइंग अबव और डाउन, ठीक है। जैसे हमने बात की थी स्क्विस्टर डिस्क, मतलब स्क्विस्टर डिस्क है वो काफी दूर तक चली गई है, तो हम फिर एंडोस्कोप से नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एंडोस्कोप इज वेरी लिमिटेड, उसका होल बहुत लिमिटेड है, एक ही पार्ट के ऊपर है। बट ओपन सर्जरीज के अंदर वी कैन रिमूव द नेक्स्ट लैमिना एंड वी कैन रिमूव ऑल द पार्ट्स ऑफ द स्क्विस्टर डिस्क। सो उसके अंदर फिर चांसेस ये हैं कि हमें प्रॉपर उसके अंदर हो जाता है। सिमिलरली अलॉन्ग विद द डिस्क प्रोलैप्स एट टाइम्स ligamentum flavum की hypertrophy भी होती है, that is also causing the compression over the thecal side. So उसके अंदर फिर आइडियली है कि हम उसके अंदर ओपन सर्जरीज भी करते हैं। That can also be done with the microscopic और endoscopic as well. But अगर मल्टीपल लेवल के ऊपर काम करना हो तो we usually go for the ओपन सर्जरीज। ओपन सर्जरी में प्रॉब्लम यही होता है कि उसके अंदर फिर थोड़ी रिकवरी टाइम चाहिए होता है, बिकॉज मसल रिट्रैक्शन, वी हैव डन अ लॉट ऑफ मसल रिट्रैक्शन। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मसल रिडक्शन अच्छी खासी हो रही है, तो उसके अंदर फिर रिकवरी टाइम थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है। माइक्रो एंडोस्कोपिक हो गया या प्योर एंडोस्कोपिक, उसके अंदर जो है वो अगेन सिर्फ एक स्मॉल सा होल बन रहा होता है, रिट्रैक्शन कोई खास नहीं हो रही। मसल स्प्लिटिंग टेक्निक होती है एक्चुअली, ये मसल को हम काट के रिट्रैक्ट नहीं कर रहे होते, वी ओनली स्प्लिट द मसल। वंस वी रिमूव दिस ट्यूबुलर सिस्टम, मसल वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। सो रिकवरी इज वेरी मच स्मूथ इन दिस केसेस, माइक्रो एंडोस्कोपिक हो गया या प्योर एंडोस्कोपिक के अंदर।
ठीक है, एंड दीज प्रोसीजर माइक्रो हो गया या प्योर एंडोस्कोपिक, दीज कैन बी डन अंडर द स्पाइनल एनेस्थीसिया। इवन ओपन सर्जरीज भी स्पाइनल एनेस्थीसिया में की जा सकती हैं, बट ओपन जनरली ऑप्ट करते हैं फॉर द जनरल एनेस्थीसिया। बट माइक्रो एंडोस्कोपिक एंड एंडोस्कोपिक, प्योर एंडोस्कोपिक आर द वंस जहाँ पे हम जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर भी काम कर सकते हैं, और डे केयर के तौर पे दीज प्रोसीजर्स कैन बी डन। लार्ज डिस्क हो तो फिर वो जनरली जो है वो ओपन सर्जरी में चली जाती है या माइक्रो में चली जाती है, माइक्रो एंडोस्कोपी के अंदर। सो कमिंग टू द आउटकम्स आर जनरली वेरी गुड अगर पेशेंट टाइमली ट्रीट कर लेता है एंड पेशेंट टाइमली प्रेजेंट करता है एंड यू हैव डायग्नोज द पेशेंट एंड इन टाइम, सो पेशेंट जो है उसकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी कि पेशेंट की सिवियरिटी सिम्टम्स की क्या है और उसकी डिस्क प्रोलैप्स की कंडीशन क्या है, एंड एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइक एसोसिएटेड प्रॉब्लम का क्या मतलब है कि पेशेंट हैज मल्टीपल कोमॉर्बिड्स, पेशेंट हैज, जब उसको इनिशियली डिस्क प्रोलैप्स था बट नाउ डिस्क प्रोलैप्स के साथ साथ लिगामेंटम फ्लेवम की हाइपरट्रॉफी हो गई है, डिजेनरेटिव चेंजेस जितनी ज्यादा हो गई हैं, उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, बोन वीक है, बोन के फ्रैक्चर्स हैं उनके अंदर, सो दीज आर द एसोसिएटेड पैथोलॉजीज एंड कोमॉर्बिडिटीज जो कि फिर आउटकम्स को खराब कर सकते हैं इनके अंदर। बट जनरली अगर सिर्फ डिस्क प्रोलैप्स है तो आउटकम इज वेरी गुड अनटिल अनलेस के मल्टीपल लेवल के ऊपर सिवियर कंप्रेशन के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा हो तो फिर उसके आउटकम थोड़े से खराब होने के चांसेस होते हैं। सिमिलरली अगर पेशेंट जो है वो इफ पेशेंट हैज प्री ऑपरेटिव न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, लाइक कोई उसको सेंसरी डेफिसिट है बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का, या उसको कोई मोटर डेफिसिट है, सो वो फिर उसके अंदर आउटकम को पोर करते हैं बिकॉज दैट शोज के नर्व जो है वो सिवियर कंप्रेशन की वजह से उसके अंदर चेंजेस आ चुकी हैं, बहुत सिवियर एट्रोफी काइंड ऑफ चेंजेस आ चुकी हैं जो कि मे बी पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी ना हो, पेन से पेशेंट रिकवर कर जाएगा बिकॉज द कंप्रेशन विल बी रिजॉल्व, बट जो कंप्रेशन की वजह से, लॉन्ग टर्म कंप्रेशन की वजह से जो डेफिसिट आ गया है उसके अंदर नर्व रूट के अंदर, सो दैट कैन परसिस्ट, सो वी हैव टू काउंसल दिस पेशेंट बिफोर हैंड। तभी हम कहते हैं कि व्हेन द पेशेंट हैज पेन इनिशियली और पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस इंटैक्ट है, मतलब कोई उसको वीकनेस नहीं है, बट डिस्क प्रोलैप्स उसको है, डायग्नोसिस हो चुका है, सो आइडियली पेशेंट शुड बी ट्रीटेड एट दैट टाइम आइदर विद द मेडिकेशन और विद द सर्जरी, बट दैट इज द आइडियल टाइम। वंस पेशेंट डेवलप्स द डेफिसिट्स फिर उसके आउटकम खराब हो जाते हैं, पेन तो सेटल हो जाएगा, सर्जरी फिर भी करनी पड़ेगी, बट देयर मे बी कि उनको कोई ना कोई डेफिसिट बाद में रह जाए उसके अंदर। सिमिलरली पोस्ट ऑपरेटिव फिजिकल थेरेपी, बिकॉज आप सर्जरी की वजह से अगर ओपन सर्जरी खासतौर पे हुई तो मसल स्पैज्म हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिट्रैक्शन, सो और इसी तरीके से अगर पेशेंट को कोई डेफिसिट है पहले से तो पेशेंट विल नीड द फिजिकल थेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन प्रोसेस कुछ वीक्स के लिए फर्दर। बट जनरली ओपन सर्जरी में ये होता है कि वी एडवाइज देम 2 वीक्स बेड रेस्ट, दे कैन वर्क जो छोटा मोटा घर के हद तक दे कैन डू देयर एक्टिविटीज, बट जनरली ये होता है कि हम उनको 2 वीक्स का, सो दैट के प्रॉपर उसका जो है वो रिकवरी हो जाए, उसके अंदर हीलिंग प्रॉपर हो जाए, उसके अंदर स्टिचेस रिमूव हो जाए, एंड देन पेशेंट कैन गो टू हिज वर्क इमीडिएटली। बट इन माइक्रो एंडोस्कोपिक और एंडोस्कोपिक सर्जरीज वहां पर कोई बड़े इंसिजन्स नहीं है and the recovery time is very short, so patient can go to his work in like 5 days or 1 week time. So this is all from my side. I hope you guys somehow kuch na kuch understand kiya hoga about the intervertebral disc prolapses. Thank you so much, Dr. Farrukh. So we do have a few questions, but just before I bring go with them, I would just like to thank you for such a comprehensive lecture on exactly what spinal prolapses are, right from the top on how they present, what could possibly be the reasons and how you can prevent them, and then moving on to the different types of surgeries. So I'm sure everyone here really enjoyed it. So if you're ready for the questions, I'll go ahead and... Yeah, I'm completely ready for that. Okay, so one of them is that how can we increase the success rate of these new innovative surgical procedures to ensure more infection-free patient survival? Okay, so the new techniques जहाँ पे हम बात करते हैं, there is a problem, एक ही problem है उसके अंदर, the learning curve is longer than the open surgeries. Okay, so वो सबसे बड़ी limitation है in those procedures, and again उसके जो equipment हैं they are very much expensive and only available at few sites in Pakistan,
इन पाकिस्तान बाहर तो हर जगह पे अवेलेबल होता है, बट यहाँ पर हमारे पास बहुत लिमिटेशन है, बिकॉज उनके इंस्ट्रूमेंट जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट भी हैं, फोर्सेप भी जो अगर हैं तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव वंस हैं। तो उसके अंदर फिर प्रॉब्लम ये होता है कि एक्सपोजर नहीं है, जो नए सर्जन हैं या जो नए लोग हैं उनका एक्सपोजर बहुत कम है उनके अंदर। सो दैट इज वाई जो लर्निंग कर्व का प्रॉब्लम है वो आता है। बाकी इसके अलावा आउटकम्स, अगेन अगर यू आर डिसाइडिंग कि मैंने एक पेशेंट को एंडोस्कोपिक प्रोसीजर करना है, तो इंडिकेशन शुड बी एब्सोल्यूट। ऐसा नहीं है कि आप उसकी सिर्फ अपने उसके लिए कर रहे हो कि मैं एंडोस्कोपिक ट्राई कर लेता हूँ। इसके अंदर ट्राई वाली बात नहीं है। अगर आपकी इंडिकेशन प्रॉपर है, इफ यू हैव एग्जामिन द पेशेंट प्रॉपरली एंड यू हैव असेस द पेशेंट प्रॉपरली, फिर आपने स्कैन प्रॉपरली उसके देखे हुए हैं, तो दीज प्रोसीजर आई मीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो बहुत अच्छी उनकी रिकवरी है, बहुत अच्छा वो है उसके अंदर। सिर्फ और सिर्फ वही लर्निंग का बड़ा प्रॉब्लम है। बाकी सिमिलरली है, बिकॉज एनाटमी इज द सेम, बिकॉज प्रोसीजर सेम है, वी हैव टू रिमूव द डिस्क उसके अंदर भी, वहां पर भी। सो उसमें कोई और मेजर ऐसा डिफरेंस नहीं है। Thank you so much. That makes a lot of sense. There's another one that says, can you explain the typical criteria you use to decide between conventional surgery and endoscopic surgery for patients with disc herniation? As I said कि अगर लार्ज डिस्क है और पेशेंट जो है वो, एंड अगेन फिर वो सर्जन की प्रेफरेंस है। इफ सर्जन इज नॉट वेरी मच फेमिलियर विद द एंडोस्कोपिक और माइक्रो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, सो ऑब्वियसली ही कैन नॉट एडवाइज द पेशेंट कि आप जाके इसको एंडोस्कोपिक सर्जरी कर लें, बिकॉज ही विल हैव टू रेफर इट टू समवन एल्स। ठीक है, सो एक तो वो प्रॉब्लम आ गई। सेकेंड ये कि अगर देयर इज अ लार्ज डिस्क, देयर इज अ मल्टीपल लेवल डिस्क, सो उनके अंदर फिर लिमिटेशन आ जाती है। एंड सिमिलरली देयर इज अ टर्म वी कॉल इट द posterior decompression. Posterior decompression means जो थिकल सैक है उसके ऊपर बहुत सिवियर कंप्रेशन, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द डिस्क बट ऑल्सो फ्रॉम द अदर लिगामेंट्स एज वेल, लाइक लिगामेंट ऑफ फ्लेवम है उसकी वजह से हो रही है, या बोनी थिकनिंग की वजह से हो रही है बिकॉज ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस और डिजेनरेटिव प्रोसीजर। तो वहां पर जिसको हम कहते हैं स्टेनोसिस, दोज आर द वंस जहाँ पे हमें फिर एक्चुअली ओपन सर्जरी के लिए जा रहे होते हैं, बिकॉज मल्टीपल कंप्रेशन है। बट विद द न्यू टेक्निक्स and with the more learning, people are doing the decompressions with the help of pure endoscopic और micro endoscopic as well. So बहुत ही कम है ऑप्शन जहां पर हम कह सकते हैं कि जो है वो उसके अंदर हम अवॉइड करें एंडोस्कोपिक अप्रोचेस को। हाँ, कुछ कुछ जगह पे करते हैं, लाइक अगर कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम है किसी पेशेंट को, और एंडोस्कोप के अंदर यही प्रॉब्लम है कि अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो वी कैन नॉट सी ऑन द स्क्रीन, बिकॉज वहां पे सारा ब्लड नजर आएगा। आपने देखा वो कैमरा का साइज कितना स्मॉल है, उसके अंदर ओनली अ ड्रॉप ऑफ ब्लड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सो वो लगेगा कि बहुत बड़ा को ब्लीडिंग हो रही है एंड कोई कुछ विजिबिलिटी बिल्कुल खराब हो जाएगी उसके अंदर। सो वो लिमिटेशन है कुछ उसके अंदर। अदरवाइज जो है वो, या आप कोई रीडू सर्जरी कर रहे हैं जहां पर पोस्ट ऑपरेटिव पहले से बहुत ज्यादा है उनके अंदर, तो वो फिर अवॉइड करते हैं उसके अंदर एंडोस्कोपी। या फिर देर इज अदर प्रॉब्लम्स, लाइक अगर कोई ड्यूरल लीक है, पहले से पेशेंट ऑपरेट हो चुका है एंड CSF लीक उसको हो रहा है, तो फिर ड्यूरल रिपेयर के चांसेस आर हायर विद ओपन सर्जरीज। एंडोस्कोपिक में फिर ड्यूरल रिपेयर नहीं हो सकता। माइक्रो एंडोस्कोपिक में यू कैन डू दैट, बट प्योर एंडोस्कोपिक के अंदर बहुत अनलाइकली है कि आप उसको जो है वो ड्यूरल रिपेयर करें उसके अंदर। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जहाँ पे आपको कंसीडर करना पड़ता है। All right, thank you so much. There's another one. Okay, considering the comorbidities associated with late presentation of patient in case of disc prolapse, is there any specific criteria in monitoring them in the initial stages? Sorry, I didn't get you. They're saying that considering the comorbidities associated with late presentation of disc prolapse, are there any specific criteria for monitoring patient in its initial stages of the disc? Again, there are so many things we describe to the patient, like there are different red flags. रेड फ्लैग्स की सबसे जो मेजर रेड फ्लैग वही है कि जो आपके कॉर्डाइकोइनस सिंड्रोम के मैंने सिम्टम्स बताए थे। सो कॉर्डाइकोइनस सिंड्रोम जहाँ पर एनी लाइक वीकनेस इन एनी मसल ग्रुप, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं मोटर डेफिसिट, और जो है वो उसी तरीके से जो है आप पेशेंट जो है प्रेजेंट करते हैं इनकॉन्टिनेंस के साथ में। दीज आर द रेड फ्लैग्स जहाँ पे हमें देखना पड़ता है। इसके अलावा ऑन द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पेशेंट इज नॉट इम्प्रूविंग विद द पेन मेडिकेशंस डिस्पाइट चेंजिंग इट मल्टीपल टाइम्स, और उसकी सिवियरिटी बढ़ रही है उसके अंदर। सो दीज आर द थिंग्स जहाँ पे हमें फिर पेशेंट को बताते हैं कि अगर ऐसी कोई भी चीज हो रही हो तो यू हैव टू कम बैक, इवन अगर हमने 5 डेज 10 डेज का ही ट्रायल अभी हुआ, पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ तो। सो दोज आर द थिंग्स जहाँ पे हमें कोमॉर्बिडिटीज के अलावा हमें देखना होता है, हम उनको प्रॉपर गाइड भी करते हैं इसके अंदर। ये सो देयर आर 5-10 जो है वो रेड फ्लैग्स हैं जो कि हमें देखने होते हैं इसके अंदर।
All right, thank you. So if a patient develops 0 out of 5 power in bilateral lower limbs post-op, what should be our plan? So that means that something bad has happened to the patient. ठीक है, वो कुछ भी वजह हो सकती है. जनरली ऐसा होता नहीं है, because as you can see, we are only dealing with the nerve roots. और nerve roots का फायदा ये है कि they are supplying only a particular muscle group and not the whole limb as. ठीक है. सो अगर किसी एक नर्व रूट पे अगर आपने डैमेज कर भी दिया, लाइक आपने किसी एक नर्व रूट पे डैमेज कर दिया, पेशेंट में हैव अ फुट ड्रॉप, पेशेंट में हैव अ वीकनेस एट द नी, पेशेंट में हैव अ वीकनेस एट द हिप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, मेनली द फ्लेक्शन. तो वो हो सकती है. एज अ होल पूरे लिम्स की पावर जाना इज नॉट कॉमन वन एंड नॉट पॉसिबल, स्पेशली एट द लोअर नंबर रीजन्स. अगर आप ऊपर चले जाते हैं एट L1 L2 लेवल, जहां पर अभी कॉर्ड इंटैक्ट है, ऑल द lumbar nerve root has to pass from that area, so वहां पर there are chances के पेशेंट को एज अ होल किसी लिम्ब की वीकनेस हो जाए या बायलेटरल वीकनेस उसके अंदर हो जाए. बट लोअर वंस के अंदर ये होता है कि वो किसी एक की जो है ना, किसी एक मसल ग्रुप की वीकनेस होगी. एंड अगर वो भी है तो वी हैव टू इमीडिएटली गो फॉर अ रिपीट MRI टू सी के एट टाइम्स क्या होता है कि देयर इज अ रिटेन डिस्क. ठीक है, जो कि हमारे जो पहले हमने डिस्क रिमूव तो कर दी, पर उसका स्टिल कुछ पोर्शन बाकी बचा हुआ था, वी वर अनएबल टू रिमूव दैट. ठीक है, या हमने वो मिस कर दिया. सो वो बिल्कुल हो सकता है उसके अंदर, उसकी वजह से हो सकती है पोस्ट ऑप हेमाटोमा बन सकता है ओवर देयर, दैट इज कॉल्ड द एपिड्यूरल काइंड ऑफ हेमाटोमा. वो हो सकता है आपने जो इंस्ट्रूमेंटेशन की है, यू कैन डैमेज द नर्व रूट ओवर देयर, उसकी वजह से डेफिसिट आ सकता है. सो दीज आर द थिंग जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है. या फिर आपने थीकल साइड को या नर्व रूट को बहुत सिवियरली रिट्रैक्ट कर दिया है, कि जिसकी वजह से उसको मे बी टेम्परेरी उसको कॉर्ड के ऊपर या नर्व रूट के ऊपर एडिमा हो रहा हो, जिसकी वजह से उसको इनिशियल वीकनेस आ रही होगी, ओवर टाइम में इम्प्रूव. सो बट अगर ज्यादा डेफिसिट है, वी इमीडिएटली गो फॉर द MRI टू असेस इट. All right, thank you. So in the presentation, you mentioned that sciatica is a way that it could present. So one participant asked about sciatica, like general conceptions and misconceptions. Are there any myths related, especially in our culture, related to sciatica and its treatment? देखें, हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं, दे कॉल इट sciatica. जो भी उनको टांग में दर्द जा रहा होगा, दे विल कॉल इट sciatica. एंड आई डू नॉट माइंड इट कॉलिंग sciatica, बिकॉज sciatica में होता यही है कि नर्व रूट का पेन है, स्पेशली जहाँ पे हम L5 के नर्व रूट की बात कर रहे होते हैं या हम sciatic नर्व की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमें sciatica उसको हम सिंपली कह देते हैं. बिकॉज अगर आप sciatic नर्व की देखें तो देर आर मल्टीपल नर्व रूट्स इन दैट sciatic नर्व. दैट इज नॉट अ only one nerve, there are multiple nerve roots in the sciatic nerve. So किसी भी लेवल पे कंप्रेशन होगा तो पेशेंट विल प्रेजेंट विद द सिमिलर फीचर्स. जहाँ पे sciatic nerve के पाथवे के अंदर प्रॉब्लम आ रही होगी, पेशेंट विल कॉल इट sciatica. सो हम उनको कहते हैं कि यस, दिस इज sciatica, बट sciatica हैज मल्टीपल आई मीन फैक्टर्स, या उसकी कॉजेज जो है वो मल्टीपल हो सकती हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम वही बात कि हम सिंपल मसल स्पैज़म की वजह से, किसी को SI जॉइंट के प्रॉब्लम की वजह से, फेसिक जॉइंट की प्रॉब्लम की वजह से, नर्व रूट के कंप्रेशन की वजह से, आइदर एट द इंटरवर्टिबल फोरामिनल लेवल और बिकॉज ऑफ द डिस्क प्रोलैप्स और बिकॉज ऑफ द स्टेनोसिस. सो देयर आर मल्टीपल रीजन, वी नीड टू लुक इनटू दैट कि उसका कॉज क्या है एक्चुअली. ठीक है, sciatica वो कहने दें, कोई मसला नहीं उसके अंदर, बट हम उसकी कॉज पे जाएंगे कि कॉज क्या है एक्चुअली. आ रही है समझ में? सो सिंपल बैक एक्स रिलेटिंग टू लेग्स आर कॉल्ड sciatica. So, but causes can be different and treatment is different in all those cases. All right, thank you so much. Just one last question related to the presentation, and then there's a few questions related to your career as a neurosurgeon. So one of the questions is that what is your opinion on syrinx formation and how is it treated in a surgical setting? Sorry, syrinx? Syrinx, yes, syrinx formation. Oh, actually, okay. So syrinx is a very different problem altogether because वो वहीं पर होती है जहाँ पर कॉर्ड आपके पास है. लंबर में हमारे पास syrinx नहीं होता because already जो कॉर्ड है at the lower border of L1 और upper border of L2 वो उसकी टर्मिनेशन हो चुकी है, कंप्लीट हो चुका है. ठीक है. सो syrinx is a very different thing. वहां पर क्या होता है कि जो सेंट्रल कैनाल होती है उसके अंदर, ठीक है,
तो उसके अंदर जो है वो देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ CSF विद इन द कॉर्ड, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली द सैरिंग्स। ठीक है, उसकी वजह से होता है क्या है कि देयर आर सेंसरी चेंजेस अराउंड दैट एरिया, बिकॉज जहाँ पे सेंट्रल में वो CSF की एक्युमुलेशन हो गई है, उसके सराउंडिंग में देयर आर डिफरेंट पाथवेज जो कि क्रॉस कर रहे हैं वहां से। तो उन पाथवेज का जो है वो फिर फीचर्स आते हैं पेशेंट के अंदर। जनरली दे आर द सेंसरी वंस, बट एडिशनली व्हेन द मतलब जो सेरिंग्स है उसका साइज बढ़ता जा रहा होता है, तो फिर उसके अंदर वो फिर मोटर डेफिसिट के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। बट जनरली वो सेरिंग्स जो है वो उसके साथ में सेंसरी के साथ में प्रेजेंट करते हैं। बट देयर आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ सेरिंग्स। कंजेनाइटल हो सकती हैं, दे कैन बी एसोसिएटेड विद द कैरी malformation, दे कैन बी एसोसिएटेड विद ट्रॉमा, दे कैन बी एसोसिएटेड विद ट्यूमर्स। ठीक है, कि जहाँ पर ट्यूमर है दैट इज ब्लॉकिंग द CSF पाथवे, और उसकी वजह से उसके ऊपर या नीचे सेरिंग फॉर्मेशन हो सकती है एसोसिएटेड विद दैट ट्यूमर। सो देयर आर डिफरेंट कॉजेज टू द सेरिंग फॉर्मेशन। वो हमें फिर देखना होता है, ग्रेड करना होता है कि उसको क्या है। कैरी के साथ में होता है तो वी जनरली ट्रीट द कॉज। हमेशा हमारी कोशिश होती है कि कॉज क्या है, उसको कॉज को ट्रीट करें। इफ द कॉज इज कैरी, वी ट्रीट द कैरी एंड वी वेट एंड ऑब्जर्व फॉर द सेरिंग्स। तो पेशेंट के अक्सर सिम्टम्स भी रिजॉल्व हो जाते हैं एंड द सीरिंग्स का साइज भी कम हो जाता है। बट अगर कोई मेजर कॉज नहीं है, बट पेशेंट हैज very, I mean, significant problem related to the syringe formation, then we have different kind of procedures for the syringe, जहाँ पे हम सिंपल एक तो उसको टैप कर सकते हैं। टैप मीन्स कि हम उसको पंक्चर कर सकते हैं टू रिलीज दैट अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो कि वहाँ पे एक्युमुलेट हो रहा है। ठीक है, एंड वी कैन ऑब्जर्व के दोबारा से एक्युमुलेशन तो नहीं हो रही। उसके अलावा हमारे पास और ऑप्शंस होते हैं कि वी पास डिफरेंट काइंड ऑफ शंट्स, उसको हम कहते हैं सिरिंजो सबरेक्नोइड शंट। सिरिंज से हम ट्यूब, एक बहुत छोटी सी ट्यूब होती है, वी पास इट इनटू द सबरेक्नोइड स्पेस एट द सेम लेवल, उसी लेवल के ऊपर। ठीक है, बहुत डेलिकेट सर्जरी होती है, माइक्रोस्कोपिक सर्जरी होती है कि हम उसको एक पाथवे बना देते हैं कि जब भी वहां पे CSF आएगा दैट विल गो इनटू द सबरेक्नोइड स्पेस डायरेक्टली, एंड वहां पर ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है तो फिर वो सबरेक्नोइड स्पेस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा ओवर टाइम। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स जहाँ पे हम उनको करते हैं। उससे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, वी गो फॉर न्यूरोपैथिक पेन, एनाल्जेसिक्स, तो इस तरह की चीजें हम उनके अंदर मतलब पेशेंट को कर रहे होते हैं, सप्लीमेंट्स दे रहे होते हैं उसके अंदर। सो इस तरह से हम ट्रीट करते हैं। Right, thank you so much. So coming on to your career as a neurosurgeon, people are asking, what was your journey from graduation to where you are right now, and what were the challenges you faced, and what advice would you give to people who want to follow in your footsteps? The only thing that brings me to this stage is my interest in neurosurgery. Okay, so हमेशा मैं तो सबको यही गाइड करता हूँ, अगर कुछ भी करना है तो गो विद द इंटरेस्ट। ठीक है, आपको बाकी सारे एक्सपेक्ट्स देखने होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट में हर चीज करते चले जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू बी वेरी मच रियलिस्टिक इन बीइंग एंड सम फील्ड, और अगर कोई भी आप प्रोफेशन चूज कर रहे हैं तो, बट जो पैशन है या जो इंटरेस्ट है दैट विल टेक यू, आई मीन, द लॉन्गर वे। सो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। बाकी रहेगी ये बात के, आई मीन, और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। न्यूरोसर्जन, आई यूज्ड टू फैसिनेट न्यूरोसर्जन्स। ठीक है, आई मीन दे हैव, आई शुड नॉट से इट लाइक दिस, बट still I feel that they have a different personality, they have a different attitude, they are always, I mean, at the top, and I mean आप उनको बहुत easily you can recognize in our, I mean, gathering या जो भी आप कह लें कंपनी के अंदर, you can very easily recognize कि this is a person who has something else, I mean, जो कि बाकी लोगों से थोड़ा सा हटके है। And I'm not saying कि बाकी फील्ड अच्छी नहीं है, they are, but I'm just saying it because इतनी डेडिकेट सर्जरी, इतनी डेडिकेटेड काम हो रहा होता है इसके अंदर, so that is why उनके पर्सनैलिटी के अंदर that comes over time। so वो एक चीज होती है। उसके अलावा सिमिलरली पाकिस्तान में ऑब्वियसली हमेशा से बहुत शॉर्ट रहा, आई मीन शॉर्टफॉल रहा है न्यूरोसर्जन्स का। नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ न्यूरोसर्जन, लाइक 10 years और 7 years हम पीछे जाएंगे तो हमारे पास बहुत लिमिटेड से थे। अभी जो हैं वो एटलीस्ट 10 times हो चुके हैं उसके, जो हमारे से आज से 10 years बैक थे। सो बट स्टिल वी नीड अ लॉट ऑफ मोर न्यूरोसर्जन्स कमिंग विद डिफरेंट स्पेशलिटीज। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको न्यूरोसर्जरी में आना है तो आप देखें कि आपको इंटरेस्ट किस चीज के अंदर। न्यूरोसर्जरी इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल फील्ड। अगर आपको लोगों को लगता है कि हाँ डेलिकेट तो है बट बहुत स्मॉल सी फील्ड है, स्मॉल नहीं है। इसके अंदर इतने ज्यादा एस्पेक्ट्स हैं कि अब जो है वो आप
काउंट भी नहीं कर सकते, इतने ज्यादा काम हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। सो वी कैन हैव द स्पाइन, वी कैन गो फॉर द, अब स्पाइन में भी अगर हम बात करें ओपन सर्जरीज अलग हैं, इसी तरीके से जो एंडोस्कोपिक या मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज हैं वो अलग हैं, इसी तरीके से जो डिफॉर्मिटी सर्जरीज हैं लाइक स्कोलियोसिस हो गया, काइफोसिस हो गया, डिजेनरेटिव स्पाइन होगी, उसके लिए अलग किस्म की सर्जरीज हो रही होती हैं। सो यू नीड टू बी एक्सपर्ट इन दोज फील्ड। ब्रेन में चले जाएं तो न्यूप्लास्टिक के लिए मतलब न्यूरो ऑन्कोलॉजी में अलग सर्जन काम कर रहे हैं, पीडियाट्रिक्स में अलग काम कर रहे हैं, एंडोस्कोपिक जो ब्रेन के अंदर काम हो रहा है वो डिफरेंट है, स्कल बेस इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। फिर जो इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें हैं जो कि उसके अंदर वेस्कुलर का डिफरेंट काम है उसके अंदर। सो देयर आर सो मेनी फील्ड्स इन न्यूरोसर्जरी, सो अगर आपको किसी में भी इंटरेस्ट है तो आप उसमें जा सकते हैं। बाकी ओवर टाइम यही होता है कि यू नीड टू स्टे अपडेटेड एंड साथ साथ ये कि आपको आप देखें बहुत से लोग फोकस कर अपना जो ना लूज कर जाते हैं, वो बन जाते हैं न्यूरोसर्जन एंड देन दे जस्ट लूज द फोकस एंड दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट द मनी एंड द प्रैक्टिस, ठीक है, या वो कैरियर, ठीक है, ठीक है, कैरियर प्रैक्टिस मनी विल कम विद दैट, बट अगर आप डेडिकेटेड रहेंगे, अगर आप इन्वॉल्व रहेंगे एजुकेशन एक्टिविटीज के अंदर, बिकॉज मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आई ट्राई टू स्टे विद एजुकेशनल एक्टिविटी जो भी हो रही हो, ठीक है। हम खुद भी कोर्सेज जो है वो कर रहे होते हैं, इसी तरीके से हमारे पास रेगुलर मॉर्निंग मीटिंग्स भी हो रही होती हैं, तो हम अपडेटेड इसी वजह से रहते हैं। आई एम नॉट रीडिंग बुक्स एनी मोर, ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ रहे होते हैं, डिफरेंट लेक्चर्स को सुन रहे होते हैं, जब लोग प्रेजेंट करते हैं तो उनसे डिस्कशन में काम हो रहा होता है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और फिर आप इनोवेशन के लिए हमेशा रेडी रहें, सीखने के लिए रेडी रहें, तो कोई इशू नहीं है उसके अंदर। इतनी फेलोशिप्स होती हैं दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर भी बाहर भी, यू कैन गो फॉर दैट इजीली, और आप उनसे बहुत कुछ लर्न करते हैं। आई वेंट टू टर्की फॉर लाइक 6 to 8 weeks एंड इट वाज आई मीन गेम चेंजर फॉर मी, स्पेशली जब मैं स्पाइन की बात करता हूँ तो स्पाइन जो है बहुत डिफरेंट है जो कि हम लोग कर रहे थे बेसिकली, जो हमने ट्रेनिंग में किया। बट नाउ आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड कि हम वो सब चीज़ें करें जो कि बाहर लोग कर रहे हैं, चाहे वो मिनिमल इन्वेजिव हो, चाहे वो डे केयर प्रोसीजर्स हो, चाहे वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन हो। सो इट्स लाइक दैट कि आपको करना पड़ेगा और आपको फिर अपडेटेड रहना चाहिए इसके लिए। अच्छी बात है। Okay, and just as a last question, were there any challenges you faced during your neurosurgery journey, like becoming a neurosurgeon? You know, especially like you said, कि Pakistan में there weren't many neurosurgeons. So, were there any challenges you faced because of that? चैलेंजेस, देयर आर सो मेनी चैलेंजेस। अगर आप अपने अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशन की या आप लर्निंग की बात करें तो बहुत चैलेंजेस हैं कि यू कैन नॉट फाइंड अ गुड सेंटर जहाँ पे आप जो है वो सारी चीजें ट्रेन हो जाए आपकी, ठीक है। देयर आर मेनी सेंटर्स इन पाकिस्तान जो कि बहुत अच्छे हैं, ठीक है, यू नेम इट के आपके बहुत टॉप क्लास के हैं, बट वहां पर भी बहुत सारी चीजें नहीं हो रही पाकिस्तान के अंदर। सो ये चैलेंज है आपके पास। सिमिलरली आपको सुपरवाइजर कैन बी अ चैलेंज, कि एक सुपरवाइजर है जो कि आपको जो है ना वो लुक आफ्टर कर रहा है एंड ही इज एक्सपर्ट इन वन ऑफ द फील्ड्स ऑफ न्यूरोसर्जरी, और वो बाकी फील्ड्स या बाकी जो काम इतना ज्यादा नहीं कर रहा, तो वो आपको किसी और से सीखना पड़ेगा। दीज आर द चैलेंजेस जो कि आपके ट्रेनिंग रिलेटेड है डायरेक्टली। सिमिलरली हमारे लोग आई मीन अनफॉर्चुनेटली वो उतने ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। हम ट्रेनिंग में आ तो जाते हैं, जो कैंडिडेट्स हैं वो खुद भी और उनके जो सीनियर्स होते हैं या सुपरवाइजर्स होते हैं वो भी इतने ज्यादा, बस उनको होता है कि बस ठीक है काम चलाना चाहिए, हमारे काम हो जाए, बस हमारे पेशेंट फॉलो हो जाएं, हमारी सर्जरीज फॉलो हो जाएं। वो लर्न करते हैं या नहीं करते कोई खास मैटर नहीं करता, एग्जाम उन्होंने खुद पास करना है, सारी चीजें उन्होंने खुद करनी है। सो ये वाले प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, वो हमने भी फेस किए, डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर डिफरेंट फेस किए, बट लकीली कोई ना कोई आपको ऐसा बंदा मिल जाता है कि जो कि आपको फिर बहुत हेल्पफुल होता है उसके अंदर। सो आपको यू नीड टू फाइंड दैट पर्सन एज वेल। तो मैं हमेशा कहता हूँ आप कहीं पे भी जाएं, किसी भी फील्ड के अंदर जाएं, आपको वो एक बंदा जरूर होना चाहिए कि जिसके पास आप आंखें बंद करके चले जाएं कि ही और शी गोना टेल मी द बेस्ट जो भी है मेरे लिए, ठीक है। सो वो ऐसा बंदा आपके पास, जिसको मेंटोर भी आप कह सकते हैं, आप फ्रेंड कह सकते हैं, कुली कह सकते हैं, जो भी आप उसको कहना चाहें, बट वो एक होना जरूरी है। और challenges, you can face a lot of challenges from your family because this is a very dedicated field। आप सुबह से शाम कर रहे होते हैं, स्पेशली जब ट्रेनिंग की बात होती है तो बहुत एक्सटेंसिव किस्म की ट्रेनिंग है, यू गेट टायर्ड, यू कैन नॉट गिव a lot of time to your family, ठीक है। बाद में यू कैन, जब once you are surgeon you can opt to decide कि मैंने कितना काम करना है डे के अंदर,
मैंने कितना रेस्ट करना है, मैंने कितना फैमिली को टाइम देना, दैट इज द टाइम यू कैन से नो टू डिफरेंट थिंग्स, बट स्टिल जो है वो बहुत ज्यादा काम इसके अंदर होता है, तो वो प्रॉब्लम्स आते हैं। सिमिलरली कैरियर प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज्यादा इन पाकिस्तान, वी आर नॉट वेरी मच प्रोफेशनल हर जगह पे। आई मीन जेलिसी प्रॉब्लम्स और वैसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि जहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, एंड दोज अपॉर्चुनिटीज गोज टू द वंस हु हैव डिफरेंट लिंक्स और डिफरेंट सोर्सेज। सो ये वाले प्रॉब्लम्स हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे आई गेस, ठीक है। बट इफ यू आर समवन के जो इंटरेस्टेड है और वो अपने आप के ऊपर अगर आप फोकस रखेंगे कि मैंने कुछ करते रहना है, ठीक है, बाकियों का मुझे ख्याल नहीं करना, तो फिर आप कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे। यू कैन हैव अ लॉट ऑफ, आई मीन द स्ट्रॉन्ग सीवीज आपकी हो जाएंगी उसके अंदर, ठीक है, आपके एफिलिएशन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, पीपल विल नो यू। तो फिर आपको जो है ना वो, फिर आपके चैलेंजेस कम हो जाते हैं उस तरीके से, फिर बाकी लोग आपको किसी और तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं, बट आपको प्रॉब्लम नहीं होती उसके अंदर। Right. Thank you so much, Dr. Farrukh. We all had an amazing session. Thank you so much for your time. And you've already provided your email, so I'll just note it down, and hopefully people will be reaching out to you soon. Yeah, I guess everyone जो है, जो भी हमारे पास जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, everyone had a good time with me, and कुछ ना कुछ learning obviously होगी. I cannot teach you the surgeries over here, I mean, but I was just telling you the idea के problem क्या है and how we are going to treat them, और उसके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। बट अगेन रिस्पेक्ट योर पेशेंट्स, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। इफ यू आर रिस्पेक्टिंग द पेशेंट हर लिहाज से, चाहे उसकी प्राइवेसी है, चाहे उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी है, चाहे उसकी वैसे रिस्पेक्ट है कि यू आर ट्रीटिंग देम वेरी जेंटली, ठीक है, सो फिर उनके आउटकम्स भी अच्छे होते हैं, दे गेट सेटिस्फाइड विद यू, विद योर ट्रीटमेंट। सो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने पेशेंट्स के साथ में आपका लिंक जो है ना वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ पेशेंट्स होते हैं आपको टफ टाइम देते हैं बहुत ज्यादा, बट जनरली जो है वो पेशेंट्स अंडरस्टैंड करते हैं जब आप उनको डिफरेंट ऑप्शंस बता रहे होते हैं, आप उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं, दे डू अंडरस्टैंड इट। सो दैट थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू गिव एंड टॉक टू यू गाइज। सो इन फ्यूचर अगर आपको फिर भी कभी कोई जरूरत हो किसी भी टॉपिक के हवाले से, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था बिकॉज आई वाज बिजी, तो मैंने बिल्कुल लास्ट मिनट पे ये पूरी चीजें बनाई हैं, बट आई होप के इट वर्कड। Thank you so much, sir. Allah Hafiz. ओके चलो।